हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका नाम है केआई इंडस्ट्री। सो पहले कंपनी के बारे में समझते हैं। सो बेसिकली केआई इंडस्ट्री इज इनटू द केबल एंड वायर स्पेस एंड दिस इज वन ऑफ द लीडर व्हेन इट कम्स टू द केबल एंड वायर स्पेस बिकॉज अगर आज आप केबल एंड वायर की बात करें तो केबल एंड वायर इज रिक्वायर्ड फॉर एंटायर न्यू थिंग्स विच आर हैपनिंग। सो बी इट इज लाइक solar is expanding like anything, so any kind of solar rollout, be it is you are putting the solar capacity, then transformers, then distribution, everything, you need the cable and wire. सेम डेटा सेंटर जो आपके बन रहे हैं वहाँ पे मैसिव केबल की जरूरत होगी, सो दैट्स वेयर केबल इज बीइंग यूज्ड and all these new things are happening, so cable and wire remains a big infrastructure bed where all these things help. Now coming to who all are the player in this space, so there are majorly 3-4 players, but जो major player है वो एक polycap industry and second is KEI industry जिनका generally comparison होता है. There are other companies something like RR cable or dynamic cable or those kind of company, but here will our focus will be around KEI industry and कुछ metrics पे will compare KEI versus the polycap. So if I'll talk about the growth per se for KI in this last quarter, so KI का जो revenue का growth last quarter में हुआ है वो कुछ 19.5% हुआ है versus Polycab का growth of 40%. So I mean from growth perspective there is just 50% difference that one guy is going by 40%, second guy is going by 20%. और उसका basic reason ये है कि KI industries के पास capacity नहीं है, they are building their capacity, but current capacity is completely sold out. So from that perspective, their growth is relatively lower. They have put up their entire capacity in सनातन करके गुजरात में जगह है जहाँ पे उन्होंने कैपेसिटी लगा दी है और वो चालू हो जाएगी समवेयर इन Q4. So from there the capacity will start building in and growth आना चालू हो जाएगी. जहाँ तक इनके एबिटा, वाइल एक चीज़ सरप्राइजिंग है यहाँ पे, इनकी रेवेन्यू जो ग्रो हुई है वो 20% से हुई है, 19.5% से हुई है, लेकिन जो इनका एबिटा जो ग्रो हुआ है वो कुछ 42.5% से हुआ है. और उसका रीज़न ये है कि उनका एबिटा मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम अर्लियर 10% से 11%. जबकि सेम चीज़ आप पॉलीकैब की देखोगे तो पॉलीकैब का रेवेन्यू 40% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन उनका एबिटा इंक्रीज हुआ है कुछ 35-36% से. और उनका एबिटा मार्जिन एक्चुअली में गिर गया है. उनका एबिटा मार्जिन जनरली जो 14% होता है वो 13% हो गया है और इनका एबिटा जो मार्जिन जो जनरली 10 होता है वो 11 हो गया है. तो वो क्यों हुआ है वो समझते हैं. तो फर्स्ट थिंग अब कमिंग टू द केआई इंडस्ट्री, उनका 10 to 11 इसलिए हो गया है बिकॉज उनका जो ज़्यादा सेल जो हुआ है सिंस इनका कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था, तो उन्होंने कोशिश की कि उनकी ज़्यादा सेल जो हो वो एक्सपोर्ट मार्केट में हो. और जब एक्सपोर्ट मार्केट में सेल होती है तो जनरली एक्सपोर्ट में मार्जिन हायर होता है. तो एक उनका ये रीज़न था कि एक्सपोर्ट की वजह से उनका मार्जिन अच्छा हुआ है. दूसरा, दे हैव डन डिफरेंट इनिशिएटिव व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज एंड कॉस्ट लीवरेज एंड एवरीथिंग. सो फ्रॉम देयर दे आर एबल टू इंक्रीज देयर ओवरऑल एबिटा मार्जिन, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज ज़्यादा हुई है. पॉलीकैब का मार्जिन गिरने फ्रॉम 14 to 13%, which is any which way higher than what you call KI, even than 2-3%. बट उनका गिरने का रीज़न ये है कि दे kept on saying कि जो अभी रिसेंटली के रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हुआ है स्पेसिफिकली कॉपर का, वो उन्होंने पूरा पास ऑन नहीं किया कस्टमर को बिकॉज दे वांट टू पास दैट ऑन टू अ डेफर्ड वे बिकॉज दे जनरली रेस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप एंड दे वांट टू डू दैट वे. सो इस वजह से पॉलीकैब का एबिटा मार्जिन है इन डिक्लाइन बाय 1%. But to my mind, Polycam seems to be even better bet because एक तो रेवेन्यू ज़्यादा ग्रो किया है, ऊपर से एबिटा मार्जिन चाहे गिरा है बट probably sustainably that is in higher than the KI from that perspective. But coming from the KI other initiative per se, तो इनका कुछ चीज़ें हैं which is one is इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 3,928 करोड़ की है, जबकि उनका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू वो 11,000 करोड़. सो फ्रॉम ऑर्डर बुक परस्पेक्टिव से दे आर कवर्ड फॉर 3-4 months. As far as growth of Q4 is concerned, they said they are going to grow by 25% in Q4. और ओवरऑल फुल ईयर का उनका टारगेट है कि फुल ईयर में दे आर गोइंग टू ग्रो बाय 20%. एंड इवन फॉर फ्यूचर ऑल्सो व्हेन एनालिस्ट आस्क्ड, they said they are going to grow by 20% in spite of doing all this capex for next 3-4 years. So the management entire point is that they don't want to grow into spurts that at times it will come and prices grow. They want to sustainably grow 20% year and after year. So that's what the management aspiration is that. As far as this is concerned in terms of raw material, because raw material prices are increasing and your
forex is also increasing. So on that they said that there is a natural hedging, so they don't do the hedging and everything, so which I feel like bit of a risk, because अगर अचानक से बहुत सारा USD depreciate हो जाता है या ऊपर बढ़ जाता है, other companies are doing that, but they are not very keen to do that. So from that perspective it seems like, from competition perspective, they said that the analyst raised the point that there are new companies coming, specifically in the wire space. There is Surya, there is Torrent, and these companies are coming. So, what is their viewpoint? So, from that, they said that wire is any which way very competitive space, and that's where the brand plays big role. So, it takes multiple years time to get to the speed and get to the time. So, they don't feel like that it will be a big risk, while they acknowledge that there are new competition is coming in the wire space. As far as cable space is concerned, they said that there's no new entrant, so that does not impact them. And from cable perspective, they said that there is specialty and USP, or the one thing which they are really coming out as an outlier is their EHV cable, which they have supplied to Australia. That cable is being used as a national grid mission of UK and those Spain and those countries. So that's why they said that they are very established and reliable and acknowledged player when it comes to EHV player. डिस्ट्रीब्यूशन पर से, सो इनका जो सेल है वो बेसिकली तीन तरीके से होता है, एक एक्सपोर्ट है, एक इंस्टीट्यूशनल है और एक B2C है. B2C में जो सेल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू होता है, और एज वी स्पीक देयर आर 2114 डिस्ट्रीब्यूटर है. बट द की इनसाइट दे सेड दैट अराउंड 100 जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो 70-80% सेल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं. तो दैट्स वेयर द की फोकस इज ऑन द दोज 100 डिस्ट्रीब्यूटर. दैट्स हाउ द बिजनेस इज बीइंग डन. So this is it. While good update, good growth story, they are planning to grow by 20% year after year and doing the capex and overall good story. But if I'll put in parity with the competition who is growing by 40%, EBITDA margin is higher, they are also doing the equal capex and almost at the same pace and everything. I feel like, and both are valued at the same fee. I think both are valued around 35-36 rupees. So I feel like that Polycab is much better bet when it comes to KI in current metrics and current growth strategy and valuation and everything. While it's not a buy and sell recommendation, so it's just for learning purpose. Thank you.